Hello everyone, मैं हूं VBYA. You are on VAEDO. Let's learn. In this video, we'll learn about application of spatial relativity. Okay, this is the fourth part of spatial relativity series, and it is totally based upon Lorentz transformation. For prior part, you can visit the link in the description. Now begin with the major application of spatial relativity. The first application that we will discuss is length contraction. The second application will be the time dilation. Next is the simultaneity, and the last one is the relativistic addition of velocity. Now let us begin with the length contraction. So first of all, to understand the meaning of length contraction, हमें दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर करना होगा जो एक दूसरे के रिस्पेक्ट v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं. ओके, एंड उनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो टोटली पैरेलल हैं, जस्ट लाइक दिस एनिमेशन. In this animation, जैसा हम देख सकते हैं कि the first coordinate is moving with respect to the second coordinate where x coordinates are parallel. Now let us consider कि हमने एक rod place किया है in first frame of reference with the length L. So this first frame of reference object अगर हम इसे second frame of reference से observe करें, then उसकी जो coordinate होगी which will be L prime that equals to x2 prime minus x1 prime. Now suppose एक ऑब्जर्वर है जो एस के साथ जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस है उसके साथ अटैच्ड है, ओके, और हमने एक सर्टेन टाइम टी इंस्टेंट में उस रॉड के मेजरमेंट को कंसीडर किया है. सो नाउ विद द मूवमेंट the length of the rod with respect to the first frame of reference is L equals to x2 minus x1. अब यहाँ पे differences क्या है? First frame of reference में जो coordinates हमने use किया है for the same length वो second frame of reference के साथ related है. But in this situation both the frame of reference are moving, so we have to consider the Lorentz transformation equation. क्योंकि हमें पता है कि दिस स्पीड इज इन द रेंज ऑफ रिलेटिविस्टिक ऑर्डर, तो यहाँ हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे फॉर एक्स प्राइम. सो अकॉर्डिंग टू लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन एक्स प्राइम दैट इक्वल्स टू एक्स माइनस वी टी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर. एंड if we place this expression for L prime, हमें पता है L prime is actually the length of the rod with respect to the S prime frame. So we can write x2 minus vt over 1 minus v square by c square minus x1 minus vt over 1 minus v square over c square. Now we may write L prime that equals to x2 minus x1 over 1 minus v square over c square that equals to L over square root of 1 minus v square over c square. So if we compare this with L prime, अगर हमने फर्स्ट टर्म में L prime को शिफ्ट किया, मीन्स अगर हमने जो अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को S prime में शिफ्ट कर लिया, then the length L prime that equals to L square root of 1 minus v square over c square. So this is actually the relation of length contraction. हम यहाँ easily observe कर सकते हैं कि जो फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मीन्स इस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उसमें जो वैल्यू ऑफ लेंथ है वो एक्चुअली 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इन द स्क्वायर रूट फैक्टर से रिड्यूस हो गई है. सो जो एक्चुअल लेंथ हम ऑब्जर्व करेंगे किसी ऑब्जेक्ट के लिए इन ए रेस्ट in speed which is not comparable with the speed of light, वो actually similar होगी actual length की. But if the length or if the rod is moving with some speed which is in the order of speed of light, तो वो length contract हो जाएगी with some factor. Okay, so this is known as Lorentz length contraction, and this is very important byproduct of spatial relativity. Now we have the next important application, time dilation. This is very interesting application because इसके applications time travel को predict करते हैं, जो कि बहुत ही interesting outcome है physics का and physics के applications का. So now let us consider the time dilation. First of all, again हम दो frame of reference consider करेंगे. One is S, another is S prime, which is moving with velocity v. दोनों के x coordinate coincide हैं,
हमने दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्लॉक इन बिल्ड किया है, बट जो सेकेंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है विच इज़ एक्चुअली अटैच विद एन ऑब्जर्वर. So if there is some motion, some velocity of s prime with respect to s, so इस velocity की वजह से जो perception of time है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि जो परसेप्शन ऑफ टाइम है वो दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए सिमिलर नहीं होगी इफ़ वी अप्लाई द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन. ये एल्बर्ट आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी का सबसे इंटरेस्टिंग बाय प्रोडक्ट था. सो नाउ लेट अस कंसीडर द टाइम इंटरवल जो कि फर्स्ट ऑब्जर्वर मेजर करेगा विच इज t2 माइनस t1 एट फर्स्ट प्लेस. In the second situation, the time interval which is measured by the second observer means the observer in the second frame of reference is delta t prime that equals to t prime 2 minus t prime 1. So as per Lorentz transformation equation, if we consider the transformation of time जैसा कि हमने already derive किया हुआ Lorentz transformation वाले part में, that t prime equals to t minus vx over c square over 1 minus v square by c square. So in further, if we consider the delta t prime which is difference in the time for the second frame of reference, then we can write t2 minus vx over c square by square root of 1 minus v square by c square minus t1 minus vx over c square by square root of 1 minus v square over c square. So in further, we may write delta t prime that equals to t2 minus t1 over 1 minus v square over c square, or delta t prime that equals to delta t over 1 minus square root of 1 minus v square over c square. So this is the final expression of time dilation. In this, we can easily predict with the use of v and c, because if v is approximate to c, the result of delta t prime is greater than delta t. So delta t prime is actually the measured value of time interval in s prime frame and delta t is the time interval in s frame. तो यहाँ ये बिल्कुल एविडेंट है दैट जो टाइम फ्रेम एस प्राइम मेजर करेगा वो एक्चुअली ग्रेटर होगा इन कंपैरिजन टू डेल्टा टी. दैट मीन्स हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो परसेप्शन ऑफ टाइम है वो एक्चुअली चेंज हो जाएगी एंड टाइम जो है वो सेकेंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रिलेटिवली स्लो होगी. So you can conclude that the interval of time is actually different for two frame of reference अगर उनके बीच कोई velocity हो. So this is very interesting result. For moving frame of reference जो time है वो delay हो जाती है and this phenomena is known as time dilation. Next we have the other important application of spatial relativity जो हमारे common perception of simultaneity के बारे में है. नॉर्मली एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर दो इवेंट्स साथ में हो रहे हैं, साइमल्टेनियस हो रहे हैं, तो वी कैन कंसीडर दैट यही इवेंट दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी सिमिलरली ऑब्जर्व साइमल्टेनियसली ऑब्जर्व होगा. बट अकॉर्डिंग टू रिलेटिविटी ऐसा नहीं होता. वी कैन टेस्ट दिस बाय सम एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनिटी. In this consideration, we have considered two clocks which is placed in two frame of reference S prime and S, and an observer attached with the frame of reference. इसके just in between हमने एक फ्लैश लाइट कंसीडर किया है एंड सपोज एक इस फ्लैश लाइट से एक लाइट बीम प्रोपगेट करती है टुवर्ड्स द फर्स्ट ऑब्जर्वर विच इज प्लेस्ड एट L पोजिशन विच इज एविडेंट इन द फिगर. नेक्स्ट ये another light beam प्रोड्यूस करती है विच विल प्रोपगेट ऑन द अदर साइड, और यहाँ भी एक ऑब्जर्वर है जो कि एक पर्टिकुलर टाइम में से नोट करता है विच इज एट द पोजीशन ऑफ 0 इन द कोऑर्डिनेट. नाउ बोथ द क्लॉक्स आर इक्वली सिंक्रोनाइज, बट जैसे ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव करेगी जैसा कि एविडेंट है इस एनिमेशन में, देन द पॉइंट्स वेयर वी कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ क्लॉक आर डिफरेंट, बिकॉज हमें पता है कि जो परसेप्शन ऑफ टाइम अकॉर्डिंग टू लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द पोजिशन. सो हेयर जो फर्स्ट क्लॉक है विच इज प्लेस एट x1 equals to 0 at the time t1 equals to L upon 2c, and जो second
क्लॉक जब सिग्नल नोट कर रही है which is x2 equals to L and t2 equals to L upon 2c. So in general, if we consider the perception of first observer to the second with respect to the signal, then we can use the Lorentz transformation equation for time for the first frame of reference for the first observer as t1 prime that equals to t1 minus v square over c square x1 prime over square root of 1 minus v square by c square. As हमें पता है कि जो first observer है which is placed at a coordinate which is x that equals to 0, so we can write L over 2c here with the square root of 1 minus v square by c square. Next we have the clock 2 and its coordinate of time as t2 prime which is equals to t2 minus v square over c square x2. As we know, the value or position of x2 which is actually not coincide with the distance, so we can write the position L. So we have L over 2c minus v square by c square multiply with L over 1 minus v square by c square. So with the next point, as we consider that the 2 points जो कि x1 और x2 हैं वो coincide नहीं हो रहे हैं, तो जो perception of time है for first frame of reference वो exactly match नहीं होगी with the second frame of reference, by which our perception of simultaneity will be different. सो इसके अकॉर्डिंग अगर कोई इवेंट किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में साइमल्टेनियसली हो रही है तो वो दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में विच इज मूविंग विद सम रिलेटिविस्टिक स्पीड साइमल्टेनियस नहीं होगी. नाउ वी हैव द नेक्स्ट एप्लीकेशन, रिलेटिविस्टिक एडिशन ऑफ वेलोसिटी. दिस इज अबाउट द एडिशन ऑफ वेलोसिटी. मीन्स अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहें इन टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज मूविंग रिलेटिविस्टिकली, सपोज in this situation हमने s prime और s consider किया है और we have considered two particles with different velocity u and u prime. Okay, so this is just like the calculation of relative velocity in relativity with the perception of Lorentz transformation. So to begin with, let us consider the simple perception of velocity. As we know, velocity is the first derivative of distance or displacement, so you can write ux is equals to dx over dt. Next, we may write the second coordinate because इस ux को अगर हम दूसरे frame of reference से observe करते हैं, then it will be ux prime that equals dx prime over dt prime. Now from Lorentz transformation equation, we can consider that x equals to x prime plus vt over square root of 1 minus v square by c square. So this is the coordinate of first coordinate transformation, means x के लिए Lorentz transformation equation, and then in the similar way we can write the Lorentz transformation equation for the time as well, which is t equals to t prime plus vx prime over c square over 1 minus v square by c square. So now differentiating above equation, अगर हम इसे differentiate करें the first place x के लिए और फिर t के लिए, then we can get the differential element of dx that equals to dx prime plus v dt over 1 minus v square by c square. ये dx यानी x element के differential part को represent करता है because t is variable and x is variable. And in the similar way, we can write the differential part of t as dt that equals to dt prime plus v dx prime over c square in the square root of 1 minus v square over c square. Now, as we know, the velocity is equals to dx over dt, so we have to divide both the expression. So after dividing both of the expression, we'll get dx over dt that equals to dx prime over dt plus v, and in the numerator, we can get 1 plus v square over c square dx prime over dt prime. And further, we can write ux that equals to u prime x plus v over 1 plus u prime x over v over c square. हमने यहाँ कुछ भी नहीं किया, x को replace किया dx over dt, prime value को replace किया which is the velocity along x coordinate in the perception of s prime frame of reference. So at final stage, we have the formula for transformation, which is actually ux is equals to ux prime plus v 1 plus ux prime v over c square.
Now we have the some important birth point of this case. For example, अगर हम ux prime को c assume कर ले, because speed of light is the ultimate speed of nature, ये evident हो सकता है इस formula के through. So when you consider that ux is equals to ux prime plus v over 1 plus c over v square over c square, with placing the value of c in the expression, then we can get the result as c only. So if अगर हमने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यूज़ किया है, मीन्स एडिशन ऑफ वेलोसिटी की इक्वेशन को यूज़ किया है, एंड इफ यू प्लेस वन वेलोसिटी एज स्पीड ऑफ लाइट, देन स्टिल विल गेट द सेम result. On the other hand, if we consider the other component of this motion, so y component and z component ये absolutely zero है, तो ये transformation show नहीं करेगा. Next, we have the ux that equals to c and v is also equals to c. So this is next important point. जब जो frame of reference है वो भी speed of light से travel कर रही है, और जो particle है वो भी speed of light से travel कर रही है. So if we add both of them, interestingly ये result भी exactly equals to c आएगा. So c plus c 1 plus c over c square is equals to c again. So हम किसी भी velocity से मूव करें in frame of reference, we'll get the same result for speed of light, and that implies that velocity of light is always invariant under transformation. And किसी भी frame of reference में अगर हम relativistic factor को use करें, तो special जो speed of light है, which must be the ultimate speed of nature. If you have any query in this topic or the question, you can ask in the comment box. मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा as soon as possible. If this video really helped you, so please like, share, and subscribe, and also press the bell icon. Stay safe, stay curious.